एवरीवन, आज क्लास 10 का जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको समझेंगे और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। सो देखिए, ये जो इक्वेशन क्या होता है, इक्वल साइन विथ सम वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज देयर। सपोज इट इज ए इक्वेशन 2x plus 3y equal to 7. This is an equation. Why it is an equation? Sir, equal sign with some variable and constant is given. Similarly, suppose 2x square plus 3x plus 5 equal to 0. This is also an equation because equal sign and some variable and constant is given. But 3x plus 5, this is not an equation, it is an expression. Okay, so we'll discuss what quadratic equation. How do you know it is a quadratic equation? How do you know it is a linear equation? So it depends upon degree. Do you know what is degree? Degree is what? Highest power of the variable. Here highest power is 1, so it is called what? Linear equation. If highest power is 2, then it is quadratic equation. If highest power is 3, it is a cubic equation. So today we will discuss what? Quadratic equation. See, so standard form of the quadratic equation is what? Ax square plus bx plus c equal to 0. This is the standard form of the quadratic equation where a should not be 0. If a equal to 0, it's no more a quadratic equation. Suppose a equal to 0 हो जाता है, तो 0 into x square plus 3x plus 5 equal to 0. So this would be 0. So only 3x plus 5 equal to 0. So it is a linear equation. So that a should not be 0. B may be 0, C may be 0, but a should not be 0. So it is a quadratic equation. Suppose an equation is given x minus 2 into x plus 1 equal to x minus 1 into x plus 3. Is it a quadratic equation? So how do you know it is an equation? So check it, expand करो। कैसे एक्सपांड करेंगे? इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो x into x plus 1 minus 2 into x plus 1. Similarly here also you can do same thing. A distributive property, x into x plus 3 minus 1 into x plus 3. So it is x square plus x minus 2x minus 2 equal to here x square plus 3x minus x minus 3. X square is cancelled. So it is no more a quadratic equation because whatever it is given, what? Minus x minus 2. Here is 2x minus 3. So minus x, if we transfer to this side, minus 2x minus 2 plus 3 equal to 0, minus 3x plus 1 equal to 0. So it is a linear equation. Okay, so by solving you see if the degree is 2, so it is a quadratic equation. Next step, listen. तो ये जो होता है ना, सॉल्विंग कैसे करेंगे, ये होता है पहचान, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानता है कैसे, इफ डिग्री इज 2, then solving roots, how to find the roots of the quadratic equation. There are two methods, one is factorization method, another is formula method. Factorization is, you know, listen, suppose it is given x square minus 2x plus 10 equal to 0. So how can you solve? Okay, so by splitting the middle term. अगर एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं, सुनिए, स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 इट इज गिवन. So this is a quadratic equation. Then how can you solve it? Solve means you have to find the root of the quadratic equation. There are two methods. One is middle term splitting, जिसे factorization method. Another is formula method. We are discussing here what? Factorization method. कैसे करेंगे देखिए, x square x constant, always arrange like this. So x square plus 4 minus 4 is, you have to arrange their powers in descending order. So x square minus 4x plus 4 equal to 0. तो कैसे करेंगे, तो split this middle terms into two factors. When you add these two, it became this middle one, and if you multiply these two, it became the product of the extreme. देखिए, so product of the extreme क्या होता है, so just coefficient 4 into 1 4. तो मिडिल को कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए 2 जब प्राइम फैक्टर में कर लीजिए, सो 2 यस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus 2x. When you simplify these two, it became this middle one, and if you multiply these two, it became the product of the
extreme. So minus 2x minus 2x, it is minus 4x. So if we multiply these two, minus 2x into minus 2x, that is plus 4x square होता है, then plus 4. Only split this middle factors or middle terms into two factors. When you add these two, it became this one. You will take common. So x common लेंगे तो x minus 2, minus 2 अगर common ले जाएंगे तो x minus 2. So always see this should be equal. Otherwise you have done some mistake. So x minus 2 remaining is this is a term, this is another. Terms are always separated with a plus or minus. So this is one term, this is another term. In between these two, what is the common? No sir, x minus 2 is a common. So remaining is x minus 2 equal to 0. When product of the two factor is 0, either this one 0 or this one 0 or both should be 0. Because 0 into anything equal to 0 or this equal to 0. 0 into anything also equal to 0. So x minus 2 अगर 0 हो जाता है तो x equal to 2. Similarly x minus 2 equal to 0 हो जाता है, x equal, two roots are equal. So see, quadratic equation having how many roots are there? At most two roots. At most two roots. That's max to max two roots हो सकता है. Either two roots or one roots or no real roots भी हो सकता है. Okay. So this is what factorization method. Otherwise we have to do what? By formula method. So देखिए another method is formula. How to find the roots by using formula. See, standard form of the quadratic equation is what? Ax square plus bx plus c equal to 0. So x equal to, so there is a derivation is there, but you need not record the derivation of the formula. You just remember the formula. So x equal to what? Minus b plus or minus square root of b square minus 4ac whole divided 2a. Sir, what is b? Sir, b is the coefficient of x. What is a? A is coefficient of x square. What is c? Sir, c is the constant terms. Suppose give an example here. 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0. Solve it. So by using formula method. So a, write down first. A equal to what? Coefficient of x square, that is 3. What is b? Sir, b is the coefficient of x minus 4 root 3. Sign के साथ ले जाओ. Then c is constant. C equal to 4. Now put the formula here. So minus b is what? Minus 4 root 3 plus or minus square root of b square. B is what? Minus 4 root 3. It's a square. Minus 4 into c. C is constant 4 and a is what? 3 whole divided 2 into 3. तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. सो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस. सो 4 रूट 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ. सो देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस. नेक्स्ट 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एज वेल एज रूट 3 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर क्या है? 16. रूट 3 का स्क्वायर होता है 3. रूट 3 इंटू रूट 3 3. सो 16 3 जा 48. सो 48 माइनस 4 4 जा 16. 16 3 जा 48. देखिए यस, डिवाइड बाई 2 इंटू 3 6. सो 4 रूट 3 प्लस 0 हो जाता है डिवाइड बाई 6. सो 4 रूट 3 बाई 6. सो ये तो 4 रूट 3 प्लस 0 बाई 6. देन 4 रूट 3 बाई 6. 2 में कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 2 3. सो 2 रूट 3 बाई 3. 2 रूट्स आर इक्वल, सेम रूट होता है. सो नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट? नेचर ऑफ द रूट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक में एग्जाम में जरूर आता है. सो नेचर मीन्स ये रूट कैसे होगा, तो कैसे पता चलेगा? तो यू नो फॉर्मूला मेथड में अगर जो x का वैल्यू निकलते हैं, कैसे निकलती है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड 2. सो रूट्स डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर. इफ इट वुड बी नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो जाता है तो नो रियल रूट्स होता है. तो इसमें डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रूट्स. इसको बोलते हैं क्या? डी, डिस्क्रिमिनेंट. सो डी इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसको चेक करो. अगर ये इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स डी इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर दोनों रूट्स होता है, दोनों रूट्स आर रियल एंड इक्वल. राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेचर रियल एंड इक्वल. इफ डी लेस देन 0, दिस इज नेगेटिव हो जाता है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स. इफ डी ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव का रूट आउट निकलता है. सो दोनों डिफरेंट होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल and different. Okay, so this is the nature of the roots.
एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. हाउ डू यू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स? So you have to find the d. So d is what? B square minus 4ac. Sir, what is b? Now b is the coefficient of x. x का coefficient क्या है? 1. कुछ नहीं means 1 है. तो b equal to 1. What is a? A is coefficient of x square. Its value also 1. Coefficient x and nothing means 1 is there. What is c? C is the constant, that is minus 1. So check करो अभी. तो 1 square minus 4 into minus 1 into 1. तो 1 minus or plus 4 that equal to 5, which is greater than 0. So real, so greater when d is greater than 0, so real and different but distinct, unequal जो भी होता है. तो this is the nature of the roots. So आज जो जितने टॉपिक था क्या पहले था हाउ टू नो इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्सपांड करो, डिग्री चेक करो. अगर डिग्री 2 हो जाता है तो इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये एक था पार्ट था. सेकंड पार्ट था सॉल्यूशन. हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वन इज फॉर्मूला मेथड, अनदर इज फैक्टराइजेशन मेथड. सो ऑल द फैक्टराइजेशन यू नो हाउ टू स्प्लिट द मिडिल वन. Next is this is the formula method. So third topic था nature of the roots. How do you know? So after just observing d value, so whether the roots are real, equal, unequal, whatever, this is called nature of the roots. If d equal to 0 हो जाता है, roots are real and equal. If d less than 0, no real roots. If d greater than 0, then real and distinct. but unequal होता है, but different होता है, जो भी बोलो. Okay, so these are the topics. Another is word problem related to this. So this is all about the theory parts. So in the coming class, so I'll do lot of questions. Okay, so अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.